Namaskar, welcome to House Highlights, the show where we cover the top developments of the day from both the Houses of Parliament during the ongoing winter session. I'm Isha Shah. Let's get started with the headlines. Lok Sabha passes Constitution SC/ST Order Second Amendment Bill. Government affirms commitment to development of tribal community and their areas. Discussion on SC/ST Order Third Amendment Bill in Lok Sabha. Bill seeks to include Hatti community of Himachal Pradesh in the list of scheduled tribes. And short duration discussion in Rajya Sabha on global warming emphasizes need for policy measures on climate change, focus on effective monitoring of pollution and investments in clean energy. Let's begin with an overview of the day's proceedings in the Rajya Sabha. The upper house took up a short duration discussion on serious effects of global warming and need for remedial measures to tackle it. Initiating the discussion in the House, Tiruchi Shiva of DMK expressed concern over global warming, saying that it is a contributing factor for climate change. Participating in the discussion, Kavita Patidar of BJP said, it has been the tradition of India to protect and conserve nature and natural resources. Ami Yagnik of Congress highlighted the ill effects of climate change. S. Niranjan Reddy of YSR Congress said, India is vulnerable to climate change. Members cutting across party lines took part in the discussion. Our Environment Minister has evolved some strategies. He is working on it. And I should say I am from the state of Tamil Nadu. We have our own responsibility. So the target of the union government is by 2070 there will be zero carbon emission. Am I right? I think. It is around 50 years from now. But I am scared of 2040. What was in 2000 and what is in 2020, we can see the variations. The threat has increased. The alarm bell is ringing like anything. I don't think 50 years waiting, how far? So I think the measures have to be very urgent and very immediate. प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। धरती इंसान की ज़रूरतों की भरपाई तो आसानी से कर सकती है, मगर उसके लालच का नहीं। ये धरती कहती हम सब से, तू लालच से अधिकार न कर, तू दोहन कर पर शोषण नहीं, तू प्रकृति का प्रतिकार न कर। हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। Sir, we want to go back to that standard of 1.5 centigrade temperature, and that is why we are rushing towards meeting our targets. Sir, global warming is an issue that has to be now taken very seriously, as my earlier colleagues have pointed out, that in daily life also we can contribute. We can also contribute at policy level, but the most important is that to curb this, we'll have to come with very drastic steps. And India has committed to these steps internationally on these COP27 and 26 fora. दुनिया के तमाम अपने आप को कहने वाले विकसित देश, वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीड़ित देश है माननीय। वो नजरअंदाज कर रहे हैं। वो इन समस्याओं को बार बार समझौता करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की भागीदारी तो मात्र 3% है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तथाकथित विकसित देश, वो इस पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बड़े तौर पे जिम्मेदार है। Climate change has been specified by him as one of the most important factors of existential crisis, simply because of the fact that economists don't account for it. Economic model, factors of production do not take into account climate-related impact. And therefore, even economists have expressed concern now that the economic growth model has to change. मोदी जी का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था पीपुल एंड प्लैनेट
are inseparable and human well-being and the nature are indivisible. यानी हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते। और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना। सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज ए सिंगल कॉस्मिक यूनिट। There was a recent report which mentioned that India is particularly susceptible to any increase in temperature because the temperatures may cross the human tolerance level, and the poorer sections are the ones who are going to be most affected by it. The agricultural biodiversity is also going to be affected, and there is a possibility of a large-scale food crisis that may stare at India after 20 or 30 years because of the reduction of the food output. हमारी पृथ्वी का तापमान 0.8 से बढ़कर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसकी वजह से बिन मौसम बरसात, सूखा, अधिक गर्मी पड़ना, मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे फसल चक्र में भी प्रभाव देखने को मिला और इसकी वजह से तमाम फसलें भी बर्बाद हुई और इस मौसम में बदलाव की वजह से तमाम तरह के प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, जिसको माननीय संजय सिंह जी ने भी कोट किया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। वहीं आज हमारे इसी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व के अंदर तमाम जानें भी जाती हैं। इसलिए माननीय हमें इसके कारण और निवारण पर ध्यान देना होगा। Now, the Rajya Sabha witnessed repeated disruptions by the opposition members today as the chair disallowed adjournment notices given by them on several issues. Deputy Chairman Harivansh disallowed the 267 notices of members and cited the ruling of the chairman Jagdeep Dhankar, stating that the requirements of invoking Rule 267 were not met. Deputy Chairman clarified that the premise of invoking 267 and the rules sought to be suspended must be clearly defined. Let's listen in. You may recall that Honorable Chairman on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rule that is required to be suspended. In none of the notices received today, there is any reflection as to which rule is sought to be suspended. Further, these notices are under the consideration of Honorable Chairman. Therefore, I would request Honorable members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed business. The opposition members demanded discussion under Rule 267 and cited precedents. I have a list here of 3 of the last 267 notices accepted by the Honorable Chairman. 3. The 3 are demonetization on the 16th of November 2016. Last 6 years there's been none. The farmer suicide in April 2015. That's the second last one. And the third last one is attack on secular fabric of our country, 18th of December 2014. Sir, the precedence of these last 3 267 notices is that none of them needed to link it with a rule. None of them. 267 directs us to request the chairman that there is a matter of urgent importance which needs to be brought to the notice and discussed on the floor of the House. Like I've been continuously saying, we are a council of states, sir, we represent our states, and there are issues that concern. Now, whether the one quoted by Derek, rule number 29, or whether I look at 37, it is at the discretion of the chairman. There is none of the rules suggest that chairman, we need to quote another rule and under by which this discussion can happen. Leader of the House, Piyush Goyal, and Union Minister Bhupendra Yadav defended Deputy Chairman's decision of disallowing 267 notices and stressed that the Chairman's ruling is final. Let's take a look. सदन की प्रक्रिया में सदस्यों को अधिकार रहता है कि वो अपना नियम रूल बुक्स के अंतर्गत उठाए, लेकिन जब भी कोई रूल उठाया जाता है उसके बाद चेयरमैन साहब का जो डिसीजन है वो रूल 258 में डिसीजन दिया जाता है और उसका जो सेक्शन 2 लिखा है उसमें लिखा है वो फाइनल है। तो जब सदन में ये व्याख्या हो गई है कि 267 का जो नोटिस है वो किस तरीके से दिया जाएगा, तो जो नोटिस उस डिसीजन के अभाव में दिए जा रहे हैं, उसको न मानकर दिए जा रहे हैं, वो नोटिस अपने आप में ही शून्य है।
वो नोटिस ही नहीं है, तो बिना नोटिस दिए, शून्य नोटिस दिए सदन का काम कैसे भंग कर सकते हैं? The disruptions continued despite repeated appeals by the deputy chairman to the members to allow the House to function. The chair adjourned the proceedings 3 times till 12 noon as protests continued. But moving on now, Law Minister Kiran Rijiju, in a response to a query in the upper house, underscored the need of greater representation of marginalized sections in the judiciary. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court. सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एक मात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। Thank you. Time now for a very short break in the bulletin. On the other side, news from the proceedings in the Lok Sabha. Do stay tuned. We will focus on India's strategic partnership with Germany. Technology and economy remain the critical core of Germany's policies, in which India is a partner. The most important is to see that how this green and sustainable partnership can transform India's growing economy. Welcome back to House Highlights. Let's now take a look at the key developments from the lower house today. Lok Sabha passed the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 today. Responding to the discussion, Union Minister for Tribal Affairs Arjun Munda said that if the government is reaching out for the upliftment of a community with about 27,000 population, it explains the government's good intentions. Let's listen in. Tamil Nadu प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 21 लाख 2011 के जनगणना के अनुसार, और यदि इस समुदाय की बात की जाए तो लगभग कुल मिलाकर के इसके लगभग समुदाय 27,000 है। ये समुदाय संख्या अधिक नहीं है, लेकिन जो लोग रहने वाले हैं उस तक पहुंचना कितना जरूरी है, यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार महसूस करती है कि वैसे जगहों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, उन्हें हम समझ सके, उनका समाधान कर सके। और आज तमिलनाडु के ऐसे आबादी जो मात्र हजारों की संख्या में है, उनको न्याय देने का काम हो रहा है। The Tribal Affairs Minister stated that the expenditure on scholarship for tribals has been increased and the government has allowed all the scholarship applications. पहले 10 लाख जनजातीय छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। अगर आप 2021-22 को देखें तो अभी हम 15 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यही नहीं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके साथ साथ ही ओवरसीज स्कॉलरशिप या ऐसे इसके अलावा भी कई तरह के स्कॉलरशिप, किसी में हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि कुछ में जो
पहले 1000 संख्या हमने सुनिश्चित किया था, उसको असीमित कर दिया। अब 1000 से अधिक जितने भी आवेदन आएंगे सबको हम इंटरटेन करेंगे, ये प्रावधान भी हमने कर दिया। Members cutting across party lines took part in the discussion on the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022. While BJP MP Nishikant Dubey apprised the House about 1969 Joint Parliamentary Committee recommendations and asked for necessary improvement in SC/ST's economic and social status, DMK MP DNV Senthilkumar applauded the bill. Several members took part in the discussion on the bill, including Trinamool Congress's Saugata Roy, Shiv Sena's Vinayak Raut and BSP's Maluk Nagar, among others. Let's take a look. पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन हमारे यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट शेड्यूल ट्राइब की कम हो जाती। इस कारण से सरकार ने यह माना, और यह फैक्ट है कि शेड्यूल ट्राइब का जो है सीट वो घटना नहीं चाहिए। तो जो संख्या घट रही है, जो असली जेन्युइन आदिवासी हैं, उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। जो ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल ओमिशन है, उसको इंक्लूड करके एक कॉम्प्रहेंसिव बिल आपको लेके आना चाहिए। This Narikurvar and Kurvikar community, they were deprived of their reservations for job and work for the past 5 decades. That is, 2 generations have lost opportunity of representing themselves in reservations in education and job. So due to this, a lot of graduates in this community are forced to selling beads and ornaments in temples and in markets. आज ट्राइबल एरियाज में जो माओइस्ट इंसर्जेंसी होता है, मनमोहन सिंह had described it as the biggest internal security threat of the country. Under the leadership of Ganpati, the People's War Group, the CPI Maoist, they are waging a war against the state, killing people, blowing up police vehicles, blowing up schools, blowing up roads. लेकिन 8 साल से मैं देख रहा हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंसर्जेंसी को मीट करने के लिए कोई रास्ता नहीं ले पाए। All right, now moving on, the Constitution Scheduled Tribes Order Third Amendment Bill 2022 was taken up by the lower house for consideration and passing today. The bill was introduced in Lok Sabha on the 9th of December 2022. The bill seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to Himachal Pradesh. The order lists the tribal communities deemed to be scheduled tribes in states and union territories. The bill includes the Hatti community of Transgiri area of Sirmaur district in the list of scheduled tribes in Himachal Pradesh. एक टास्क फोर्स भी गठन किया गया था 2014 में, जिसमें ये बोला गया था कि ओडिशा का जो लिस्ट है वो लेके आओ, उसमें कुछ एसटी कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने की बात हुई थी। खाली आ रहे हो कि ये दिखाने के लिए कि हम ये कर दिए वो कर दिए, नहीं होगा सर। ये इस सरकार का नहीं, हर एक सरकार को बोल रहा हूँ कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनको पढ़ाने में ज़्यादा आगे लाना चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, टीच द चाइल्ड टू कैच द फिश। वो कैच द फिश ही हैज़ टू स्टार्ट, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के चक्कर में अगर वो काम नहीं होता है तो उनके लिए अभी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का है, बताओ। शेड्यूल्ड ट्राइब बन गए, शेड्यूल्ड कास्ट बन गए, अब जॉब कहाँ है? रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? सरकारी उद्योगों में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट में मिलता तो कहाँ जाएगा फिर? और हम सारी कंपनियां बेच रहे, पब्लिक सेक्टर बेच रहे, जहां उनको एक अवसर है, एक जॉब मिलने का, वो भी निकल गया, तो क्या फिर राजनीति करेंगे? Now, replying to a question raised by Jammu and Kashmir MP Hasnain Masoodi on the increasing number of tourists at Srinagar Airport, Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia said it was a historic moment for Srinagar that not only the number of tourists from national but international tourists is witnessing an exponential surge in the city. Scindia assured the House that Srinagar Airport will be expanded with modern facilities. He said that there was a plan of nearly 800 crore rupees for the development of Jammu Airport as well. Let's listen in. 80 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट किए श्रीनगर, और ये सारा जो ट्रैफिक है ये श्रीनगर एयरपोर्ट ये हैंडल करता है।
और बस की बात नहीं है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, 110 फ्लाइट्स आती हैं दिन में। तो मैं गुजारिश करूंगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल 3, ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरियाज जो हैं वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए। एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में अब आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाएँ। जहाँ तक प्रश्न अवंतीपुरा का है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और हम लोग JNK के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएँ। पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं, लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। Congress MP Muralidharan from Kerala raised the issue of fuel prices in the Lok Sabha. Union Minister Hardeep Puri pointed out that the rise in fuel prices is less in India compared to that in other countries. He also asserted that the states ruled by opposition parties have not reduced VAT. Why the petroleum products price in India is not maintained or reduced in corresponding with the international crude oil price? सर, ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है। अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा। The opposition party staged a walkout in protest over the minister's response. And with that, it's a wrap of this edition of House Highlights. Do stay tuned to Sansad TV for all the latest from the winter session. Thank you for being here. See you tomorrow. Good night.